What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals. What does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies. ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को. ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को. इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी, लेटेस्ट hot on the block. You have to make Viksit Bharat 2047 happen. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को. ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है. दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की. दे आर इन्वेस्टिंग हेविली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, building chips, AI models, which will prepare the nation for the future. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? उसके लिए हम सबको हिम्मत करनी पड़ेगी. और ये इतना ही मैं इन्वेस्टर्स को भी कह रहा हूं, अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को. Third example, instant grocery delivery. I had not planned this, by the way. When I was sitting there, I opened my talking points. मेरे पास बड़े अच्छे talking points दिए हैं मेरी टीम ने. I read it and I said, अगर ये लोग organically आए हैं और अगर इसमें से मैं एक शब्द भी बोलूं तो इतना नक्की है कि स्टार्टअप महाकुंभ नंबर 3 में एम्प्टी हॉल को एड्रेस करने आऊंगा. That's when I asked Prashant. I took out my phone. I said, Prashant, I got this 3 days back. Is it okay if I pull it up on the screen and discuss this with the audience? That's when I asked my colleague to show it to all of you. Instant grocery delivery, latest hot on the block. I have no problems. He can list at a few $1 billion. I'm very happy. I only wish they'd had more Indian investors rather than the foreigners buying off all our startups. And ये सिद्धार्थ आप सबके लिए चेतावनी है. We need more Indian investors into the game. Again, of course, I won't comment on what it's making people and how our resources are going only towards hyper-fast logistics. And look at what the other side is doing. Robotics, automation, machine learning, preparing themselves for 3D manufacturing. Next-gen factories that are more efficient
and that compete with the rest of the world and capture markets. हम रोते रह सकते हैं, चॉइस हमारी है. यहां युवा पीढ़ी होने के कारण मैंने ये पुटअप किया. आर वी एज द फ्यूचर ऑफ इंडिया? और 2047 में शायद भुवनेश्वर को छोड़ के मे बी मैडम हम में से तो और कोई नहीं होगा. फ्रंट रो के भी इस तरफ के लोग छोड़ दो तो उस तरफ के लोग तो शायद नहीं होंगे. अमन यार तेरे को बाहर रख रहा हूं. y'all are the sculptors of new India. You have to make Viksit Bharat 2047 happen.